why I'm supposed to look at you. सेंटर लुक बस मैम आप क्या कहना चाहेंगे यू ने स्नेल एडिक्ट को लॉन्च किया है इसका So yeah, we are here at the launch of You New Addict, and it's see, I get very happy when we go to places like we are coming up with new designs in terms of clothing and nail and everything. So this is like for us, it's a new opportunity to get this to our the way we do it in Bollywood. We get new stuff to new way of filmmaking and everything. That's where the style fashion is connected to Bollywood, and we have to have this kind of new stuff coming in. And I'm really very happy to be here because I really like the product and I've seen the clothes also. So really nice to be here. बहुत सारे डिज़ाइंस हैं डिफरेंट कलर्स हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे Yeah, I'm really amazed with the color and the design and so many variety. If you see in pink and if you see in beige, they have all the variety and they all I love all of them. That's very good for any where when you have these kind of colors and these are kind of designs. So I really get connected because I do Bollywood songs and color is like main theme, and I work quite a lot in my songs also for color. So I get really connected to the colors. So the colors they have here is amazing, very good collection, and so many shades of one design is recommendable because sometimes we like the design and we don't get particular shade. That's what I see it here, that you have same print in so many colors, then you have this innovative design which is really nice. So really yeah, I'm looking forward to buy some of them very soon. मैम देखा जाए तो फिर नॉर्मली वुमेंस जो भी होती है वो काफ़ी चूसी होती है डिज़ाइंस को लेकर आप कितनी Very choosy. I'm very choosy about my colors. I'm very because जो चीज़ काम पे रिफ्लेक्ट करती है वो आपकी पर्सनालिटी होती है. So my personality, if you see today also, I always like to mix match my colors. When I assemble it very well. So I never wear one thing in one color. Always like to layer myself with so many colors. So like that, that same. I'm very choosy because of my colors. So over here also, what I like about is the color. So the combination over here is very nicely done, very creatively done. So I got immediately connected with this. So yeah, women are very choosy. So you have to keep coming up with new designs and new collections and new color combinations to make the women happy. Yeah. ऋषिता सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज आपकी शादी के बाद पहली अपीयरेंस है और आप न्यू स्टोर पे आए हो उससे पर शगुन एंड महिमा so what do you have to say about Well, if मैंने पहले I would have known them, probably one of the outfits would be from here for sure. But the outfits are beautiful. Shagun has hosted such a lovely event, and she's not even an event, a get together I would call it for Mahima and a collection. And anyway, I'm always happy. I'm back and absolutely back to work, and it feels good and it feels the same. So there's no difference. So talking about the collection and Siam design, what is your thought on fashion? Well, I like the word I am because I always believe fashion is what I am, and that's I think what they've tried to depict with their brand. And I think whatever that you wear should be you, your personality, the way you carry yourself, and the person that you are. You can wear anything that you want, but when you wear it, it should look like it's just made for you. And I think the best part is in this beautiful store, there's a great collection. It's like an amalgamation of a lot of designers, and I think Mahima, I think you've given us quite a bit of a variety, and I think Shagun, you've kind of brought all of this together. So I think I've enjoyed myself browsing through, looking at it. And I like a few, some of the dresses are very beautiful because sometimes you go to a lot of places and pick things. It's best to just find it in one place and say, okay, I got a lot of variety here. This is a very cliche question, but has life changed after marriage? Like I said, it just feels the same. I'm back to work. Everything is back on track, and it's the very same. Shagun, what do you have to say about today's event? Today's event, like for me, Mahima, I have done many events for Mahima, and she is a super businesswoman, and and I can say she's like she under one roof she has like like almost like 20 brands, and she's doing pretty good. And the designer she has launched, I am designer, and it's a new designer, and they have done pretty well job.
and it's very comfortable clothes, and you can surely wear in any wedding and like Raksha Bandhan, so like more like a ethnic sort of occasions. Yes. Mahima, what do you have to say about today's Eid? Today we are very proud to launch a new designer with ours, that is I Am Design. They have a very traditional yet modern approach with their designs. It's a very fine mix of ikat and patola that you would not see in the market. It's an illusion, it's a print. And with that, today we are also giving all our ladies a chance to glam up with nail addict that we have launched. It's a luxury nail lounge. So I would love to invite all the ladies in the store, get yourself pampered and set your style right with the right nails. मैम जो आपने डिज़ाइन किया वो लोगों के लिए कितना कम्फर्ट है? बहुत कंफर्ट है, हम कंफर्ट में ही ध्यान देते हैं। हम प्रमोट करते हैं कि लोग हील्स ना पहने, लाइट आउटफिट्स पहने और कंफर्टेबल रहे। भारी से हम हट रहे हैं। इस कलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? आई एम डिज़ाइन जो कलेक्शन आज लॉन्च हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या खासियत है इसकी? खासियत क्या है? हमारे कपड़े ऐसे हैं कि सब पहन सकते हैं, सब एजेस के लोग पहन सकते हैं। दिखने में हैवी है पर पहनने में बहुत लाइट है। कलर पैलेट हमारा बहुत फ्रेश है और कलर्स के लिए हम जाने जाते हैं। बहुत ही फंक्शनल गारमेंट्स हैं हमारे, मतलब आप किसी को किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक आउटफिट एक ही बार पहने, आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी कर सकते हैं। हाँ, और ये प्रिंट इंडियन हेरिटेज से लिया हुआ है। जो प्रिंट्स अभी हम कर रहे हैं आप देखिए, तो ये पटोला और इक्कत इंस्पायर्ड प्रिंट्स है जो लगते वीव हैं पर वो है वीव नहीं। फिर भी सब हम हैंड वर्क को प्रमोट करते हैं, ये सब हैंड डन है। आज जो मल्टी डिज़ाइनर स्टोर में इस चीज़ का लॉन्च हो रहा है, क्या फीलिंग्स है? बहुत अच्छा। बॉम्बे हमारा बहुत अच्छा मार्केट है। हम जब भी आते हैं हमें लोगों से बहुत प्यार मिलता है। हमारे लोग जानते हैं जब हम आ रहे हैं, हमको फॉलो करते हैं, हमसे हमसे टच में रहते हैं लोग कि हम कब आ रहे हैं, इधर कहाँ शो कर रहे हैं, कहाँ एग्जीबिशन कर रहे हैं। और पेडर रोड तो ये पूरा एरिया तो बहुत फेमस है, लोग ट्रैवल भी करते हैं तो इधर आते ही हैं, तो लोकेशन भी सुपर्ब है। तो हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग है। एडिट का भी तो नया लॉन्च हो रहा है आज यहाँ पे। हाँ जी, मैं आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। मैं अभी देखी भी नहीं हूँ, अभी आई हूँ, तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती। आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा और मैच कर लेंगे लोग हमारे आउटफिट्स के साथ उनका नील कलर। आप महिमा जी के साथ, शगुन जी के साथ किस तरह से आगे प्रोग्रेस करना चाहेंगी अपने कलेक्शंस को लेकर? अभी तो शुरुआत है। आई एम श्योर कि हम कलेक्शन बनाते रहेंगे, वो सेल करती रहेंगी, हम उनको रिफिल करते रहेंगे और अच्छा चलेगा, अच्छा एसोसिएशन रहेगा हमारा उनके साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अलग अलग डिज़ाइंस हैं, बहुत सारे प्रिंट्स हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। आप इस बारे में I'll tell you about the collection. The collection is called the Indian Me Fusion. It's an innovative recreation and representation of the Indian traditional crafts and textiles, mostly the Indian weaves called the ikkats and the patolas and the double ikkats. So we've created those weaves in forms of prints. The medium is print, but it looks like a weave. So it's very innovative and it's very wearable, very budget friendly also. माधवी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज न्यू मल्टी डिज़ाइनर स्टोर में आप आए हैं, इस कलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम डिज़ाइन कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। कलेक्शंस में जो नेचुरल फैब्रिक्स यूज़ किए हैं, इंडियन प्रिंट्स, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। इट्स वेरी नाइस टू यूज़ इंडियन प्रिंट्स इन टुडेज जनरेशन टू इनकलकेट ऑल द वीव्स, ऑल द फैब्रिक्स। रियली नाइस, आई लाइक योर कलेक्शन। नॉर्मली जैसे हम हर टाइम जो आप एज अ लाइक बॉलीवुड में भी हैं, तो फिर इन सब चीज़ों को टैकल करना कितना आसान होता है? अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करना, मेकअप्स एंड ऑल, फिर नेल आर्ट्स हो, आज नेल आर्ट्स का भी कलेक्शन हो रहा है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
ये सब जो products है to carry all of it off. I think it's very easy in this industry when you are to carry all these products, to use all, and I like to use Indian products also, a little bit Indian designs to showcase our country, to showcase our weaves. I really like it, and of course in this industry you have to be groomed at all times. मैम देखा जाए तो बॉलीवुड में अपने फैशन को लेकर काफ़ी चूजी होती है एक्ट्रेस, आपके बारे में क्या है, आप कितनी चूजी है? चूजी किस चीज़ के लिए? फैशन कपड़ों को लेके, स्टाइल को लेके। I like a good style. I like a good fit. I have been a model, so I like very well-fitted clothes. But since I am doing things internationally as a beauty queen, I like to use a little bit of Indian touch to show our culture, to show our nation, and that's really nice what the designers have used. बात करें लाइक आज महिमा जी के बारे में, शगुन जी जो आज एक कलेक्शन लॉन्च हुआ है, उनकी कोलैबोरेशन के लेके आप क्या कहना चाहेंगे उनको? I'd like to wish them all the very best. I think it's a great venture, and the collaborations are always really good. And Hue's a lovely store, multi-designer store, which stocks a whole lot of styles and stocks. So you don't have to visit 2-3 stores. You can just get it all under one collection. And I wish Shagun and Mahima all the best with their collaboration. Thank you. Thank you. Sorry? 15 अगस्त को लेके आपके एक विशेष अपनी जनता को लेके जय हिंद। कुछ मैसेज देना चाहेंगे 15 अगस्त के लिए? 15 अगस्त का विश और मैसेज मैं देना चाहती हूँ that we must concentrate on peace. It's not only talking about peace, it's about being peaceful. Today you see the amount of जो अनबन हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है. मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं सबको बोलती हूँ मेडिटेट करो, शांति रखो, अपने आप में शांति रखो तो सब में शांति रहेगी. थैंक यू. आई थिंक हर एक डिज़ाइनर जब एक नया कलेक्शन लॉन्च करता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है. एंड आई थिंक ये जो महिमा का मल्टी डिज़ाइनर स्टोर है, आई थिंक कलर्स से जो उन्होंने प्ले किया है, दैट्स ब्यूटिफुल. I love the fabric that she's used, and also up to some extent the embroidery and small little work that she's done. It looks very interesting. I personally love fusion, and I can see that उन्होंने fusion थोड़ा जो Indian और Western को जो mix किया है कई designs में, वो भी काफ़ी अच्छा है. I really like her collection. आपकी चॉइस को लेके अगर हम बात करें, फैशन को लेके आप किस तरह से अपने आप को खुद को स्टाइल करते हैं? देखिए, मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि ओकेजन के लिए आपको ड्रेसअप करना चाहिए. आज ये डे वेयर इवेंट था, तो आपने देखा होगा कि I've kept my hairdo in a bun, and I've worn like day glasses, and my dress also is pretty much a day, simple but classy. I think आपको comfortable होना चाहिए आप जो भी पहनो, and I always believe that simplicity and class and elegance really helps you. Keep it simple and look stylish. शगुन गुप्ता एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, और मैं आज आई हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए. आई लव हर कलेक्शन, एंड आई जस्ट विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट. और मैं चाहूँगी कि आगे भी जाके वो बहुत अच्छे कलेक्शन लॉन्च करें, एंड आई विल कम सपोर्ट देम. आई रियली विश देम ऑल द लक. थैंक यू सो मच. I am very very happy कि मुझे आज साड़ी पहनने को मिली, because I don't really end up wearing it unless it's a wedding or something like that. So I was very excited कि जब उन्होंने मुझे बोला कि ये कलेक्शन है लेकिन आपको साड़ी पहननी है. So I was actually very very excited. And Mahima has done a great thing with this store, and she's got so many designers with her. So yeah, it feels great to be here. I am like everybody else. Of course, I like to, I like fashion, but at the end of the day, fashion has to be something that you're comfortable with. So I've always followed this policy, and so I pretty much follow that. Of course, क्यों नहीं? Because the collection looks very nice. It's got some really good thing about this is there's not too much work, so it's very easy to wear, and it's light and things like that, and it's got some beautiful colors. So yeah, I would definitely
tell a lot of people to come have a look and pick up whatever suits the best for them. शादी तो जब अभी प्लानिंग चल रही है, अभी देखते हैं कब होगी. अभी एक फिल्म मैंने कंप्लीट की है जो एक बाइलिंगुअल है with Gulshan Devaya. Oddball is producing that film, so that should release also in the next few months. I would like to wish all the viewers happy Independence Day, 15th of August. So yes, let's be proud. Let's be proud Indians, and congratulations to everybody. Thank you. Yeah. बहुत ज़्यादा 2 साल हो गया. So the collection is called the Indian Me Fusion. It's an innovative representation of the Indian crafts and textiles called the ikats and patolas, and this is what she's wearing at the moment. She's wearing the freshest color for the season, a mauve, an ombre mauve dyed sari with our season's hit patola prints, with a lovely blouse. And we do very, very sexy bags, and she's carried off with elan, she's looking stunning, yeah. So yeah, we're very happy that Sagarika is wearing it for us, and she looks lovely. No, they're lovely. Like I said, there's not a lot of work, so it's like what I like about things is the textures and things like that, and that's pretty much what it has. Without being over the top, it's still got so much subtlety and so much elegance in it, and I think that is me also as a person. I like subtle things. I like something that is understated, and this is exactly that.